So I'll just quickly introduce our today's guest to all of you who are joining us. Mr. Karan Chugh is a professional singer and a podcaster, and he's been grateful for 10 million plus views on an online following of 70,000 and plus. He is known for his unique renditions of popular Bollywood songs, and he is quite active on YouTube as well. He sings in multiple languages like Hindi, English, Bengali, Punjabi, Tamil, and of course Arabic. He is an influencer and has worked with various brands such as Gillette, Mintra, Citibank, On Academy, Cure, Filt, Cult. So it's like amazing series of brands that he has been associated, and we are really glad to have with us. Not only this, but he also runs a popular YouTube podcast that features leading Bollywood celebrities, supermodels, sports person, entrepreneurs. So similar kind of a personality who is a celebrity in himself has joined today with us in the evening. So it's a pleasure to have you, Karan sir, today. Thank you so much for Absolutely. being here. Thank Yeah, you for having me, and hello to everyone who has joined in. Thank you so much for joining, and I'm looking forward to our conversation today. great. So, like my very first question, why? Why music? Why did you choose it to be yourself and express yourself through the way of music? I think that is one, it's a very difficult question because I also don't have an answer for that. I think music, you don't choose music. I think music chooses you. Music is something that I had an inclination for since I was very young. बचपन में भी आई यूज टू गो फॉर कॉम्पिटिशन्स एंड मेरे जो स्कूल टीचर थे उन्होंने सिलेक्ट किया था एंड शी हैड रिकग्नाइज कि बिना सीखे ही एक सेंस ऑफ पिच एंड रिदम है करण में तो मुझे कॉम्पिटिशन्स के लिए भेजा विच आई ऑल्सो वन बट बिकॉज आई कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली कभी ये सोचा नहीं था कि म्यूजिक को करियर बना सकते हैं तभी माइंड में सिर्फ यही था कि हाँ मुझे भी जाके बिजनेस ही संभालना है आगे जाके तो तभी कभी ऐसे प्रोफेशनली सीखना शुरू नहीं किया बट एक नेचुरल सेंस ऑफ पिच रिदम बचपन से ही था सो आई थिंक म्यूजिक हैज selected me and not the other way. So, an in-one artist, right? Correctly to say. I think you can Great. hone talent, but एक basic talent तो I think God gifted होता है, and then उसको better कर सकते हैं with efforts. डेवलप आप एफर्ट्स लेते हो उसको डेवलप करते हाँ. जाते हो दैट इज हाउ यू सक्सेस राइट तो आपने मेंशन किया दैट योर फैमिली वाज इन बिजनेस एंड नन ऑफ योर फैमिली मेंबर्स इन म्यूजिक राइट अब तक किसी ने Right. म्यूजिक No one. अपॉर्चुनिटी किसी ने चूज नहीं किया नहीं बिल्कुल नहीं. They are all music lovers. सबको म्यूजिक हाँ बहुत पसंद है बट ऐसे किसी को भी गाना नहीं आता ना म्यूजिक बजाने आता है तो आई थिंक the music is starting in our family from me now so I hope it तो continues वन ऑफ across generations. स्पेशल पर्सनालिटी इन हाउस बाकी सबको कंसिडर करते हुए इनफैक्ट ग्रेट ये फैमिली का जैसे यू ब्रॉट अप एन इंटरेस्टिंग पॉइंट बिकॉज जेनेटिक एडवांटेजेस भी होते हैं ऑफ बीइंग अ म्यूजिशियन अगर आप म्यूजिक फैमिली से होते हैं तो आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन वगैरह एनहांस होता है बेटर होता है तो जेनेटिकली भी वो एक एडवांटेज होता है बट आई थिंक वो स्टार्ट होगा इवेंचुअली हमारे फैमिली में भी अभी. योर जेनेटिक्स आर कैरी फॉरवर्ड टू इट्स स्टार्टिंग या पॉइंट राइट. राइट हाँ. तो आपने किस एज से शुरू किया लाइक कि आपको नहीं फुल फोकस के साथ कि नहीं मुझे सिंस म्यूजिक में मेरा इंटरेस्ट काफी अच्छा है तो मुझे इस पे कंसंट्रेट करना चाहिए मुझे अपनी एबिलिटीज डेवलप करनी चाहिए तो ये चीज आपको कब रियलाइज हुई एंड यू स्टार्टेड इवेंचुअली वर्किंग ऑन इट काफी लेट हुई एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली अराउंड इफ यू वांट टू स्टार्ट लर्निंग यू शुड स्टार्ट अराउंड से 8-9 years old की एज पे बट आई स्टार्टेड एट द एज ऑफ 18 तो काफी लेट रियलाइज हुआ कि ये मेरा पैशन है एंड दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत तो अभी काफी सालों से हिंदुस्तानी क्लासिकल सीख ही रहा हूँ एंड कभी कभी लगता है कि जल्दी शुरू कर लेता बट यू नो इट्स नेवर लेट तो 18 तो 18 बट हाँ सीखना अभी आई थिंक आई हैव टू लर्न even at the age of 60 I'll keep learning so that journey will never stop. Exactly. So art is something that you eventually like get more pro and more well versed eventually with the experience and practice that you do. Yeah. So आपने सिर्फ vocals में training ली बाद में या instruments या मतलब किसी instruments में भी ली है? So because आप अगर vocals play गा सकते हैं तो आप you know automatically piano भी play कर सकते हैं तो piano की थोड़ी training है मुझे piano बजा लेता हूँ बट गिटार भी मैंने ट्राई किया था एक गिटार खरीदा था यामाहा का फुल एंथुजियाज्म के साथ आई थिंक 3 क्लासेस के लिए गया उसके बाद मैंने छोड़ दिया
क्योंकि जो सिंगिंग का पुल था वो बहुत स्ट्रांग था, तो आई रियलाइज कि मेरा फुल पैशन इसमें ही है. बट आई वांट टू लर्न द तबला आल्सो, आई वांट टू लर्न द सैक्सोफोन, तो these are things that are on my bucket list. So as a musician, how this journey has been for you? Like आपने स्टार्ट तो बहुत जीरो से किया होगा, आपने इवेंचुअली यू डेवलप्ड, फिर सिंस मतलब मैंने आपके लिए जब पढ़ा, आपका इंस्टाग्राम फॉलोवर्स भी काफी अच्छा है, लाइक इट वुड हैव इवेंचुअली ग्रोन. अब आपको वो डे वन से तो इतने फॉलोवर्स नहीं मिलते हैं, तो ये Right, जर्नी right. कैसी रही आपके लिए? Like you said, ये zero से ही start किया and the journey has been tough and it is not easy to create a following for yourself. मुझे भी few years लग गए हैं to reach where I am and still I need to, grow a lot more. But initially, like you said, महीनों तक हम लोग काम करके एक अच्छा वीडियो बनाते थे and then you put it out on YouTube कि अरे ये तो वायरल जाएगा, and then आते थे क्या 50-100 views एंड वो भी फैमिली फ्रेंड्स को फोर्स करके आप लिंक्स भेज रहे हैं, वो बेचारे देख रहे, दे हैव नो चॉइस, तो वो चल रहा है. बट इवेंचुअली वही है कि परसिस्टेंस हेल्प्स. आप डालते रहो डालते रहो डालते रहो एंड यू कीप एक्सपेरिमेंटिंग. अच्छा, दिस काइंड ऑफ कंटेंट डिड नॉट वर्क, नाउ आई विल कम अप विद अ डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियो, different kind of video, so something or the other works. So I remember initially I had a lot of failed videos, nothing was working, and then I had made a mashup of Zara Zara and Vasigara. Vasigara is the Tamil version of Zara Zara, so a mashup of Hindi Tamil mashup, and that really worked for me, and that is at around 1.5 million views on YouTube right now. So that I think was my first hit. So keep experimenting, and then eventually things work out. Also, like I said earlier, फैमिली बिजनेस से था, तो फैमिली बिजनेस की एक्सपेक्टेशंस थी फैमिली में भी कि ये तो अरे फैमिली बिजनेस ही ज्वाइन करने वाला है. बट थैंकफुली आई हैव अ ग्रेट फैमिली जिन्होंने समझा मेरे पैशन को, दे सपोर्टेड मी, एंड दैट्स व्हाई आई हैव बीन एबल टू परस्यू दिस. तो डिफिकल्ट तो रहा है, बट नाउ थिंग्स आर मच बेटर. Like we have got really good admirers of you as well in the audience who वो अभी भी कमेंट कर रहे हैं लाइक मिकी माउस वॉइस इज ग्रेट, मतलब मुझे याद है उनके आपके इंस्टाग्राम पोस्ट एंड दे आर गुड फॉलोअर्स ऑफ योर्स एज वेल. थैंक यू दोस्तों. Also sweet of you to have like Thank you immediately. so much for joining, everyone. I'm so happy to be talking to all of you. Yeah, and if you people have questions, just feel free to drop it so that we can get it answered as well. अगर आपके कुछ doubts हो या आपको कुछ comment या appreciation भी करना होगा सर के लिए, तो most welcome. Go ahead. Please let So us sir, know the language also, because ऑडियंस को अगर हिंदी चाहिए तो we talk in हिंदी, नहीं तो इंग्लिश. तो जो आपकी प्रेफरेंस हो, let us know. हाँ, that would like a additive advantage. तो आपने शुरू किया to pursue it as a full time career. So who was your initial teacher? मतलब आपने बचपन से शुरू किया तो you must have got some teachers, but eventually जब आपने career pursue करने का तो did you gradually come up with new teachers, or you followed the same pattern that you have been studying? So how was it? So at the age of 18, I joined Rageshri School of Music. ये अंधेरी में, मुंबई में है. तो उनके साथ कुछ साल सीखा. बेसिक्स जो म्यूजिक के होते हैं वो वहां पे सीखे. उसके बाद आई एम करंटली ऑल्सो लर्निंग अंडर पंडित भवदीप जयपुर वाले जी. तो पंडित भवदीप जयपुर वाले जी ये बहुत बड़े गुरु हैं इंडिया के. उन्होंने कई सेलिब्रिटी सिंगर्स को सिखाया है, जैसे हर्षदीप कौर, नीति मोहन, फाल्गुनी पाठक, ये सब इनके स्टूडेंट्स हैं. तो आई एम वेरी लकी कि उनके अंडर मुझे सीखने का मौका मिल रहा है. तो अभी उनसे सीख रहा हूँ. क्लासिकल सीख रहा हूँ, सेमी क्लासिकल सीख रहा हूँ. तो कभी इन फेमस बैचमेट से मुलाकात हुई है आपकी? नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं हुई है, बिकॉज सोलो सेशंस ही लेते हैं सर. अच्छा. तो कभी कंबाइंड ग्रुप सेशंस नहीं होते हैं. अभी तो खैर 1.5 year से ऑनलाइन सेशंस हो रहे हैं कोविड सब की तो वजह से. हाँ, तो एग्जैक्टली. सो व्हाट इज लाइक आपकी सबसे पसंदीदा म्यूजिकल मेमोरी कौन सी है? लाइक इफ यू वुड बी ग्लैड टू हियर फ्रॉम यू. आई थिंक बहुत सारी मेमोरीज है, बट आई रिमेम्बर कॉलेज में हम लोग कॉलेज फ्रेंड्स भी थे जो साथ में जैम करते थे. व्हेन वी यूज्ड टू परफॉर्म इन कॉलेज फेस्टिवल्स, कॉम्पिटिशन्स, तो उसमें बहुत मजा आता था. एंड ऑफ कोर्स एक जो मेरी जो फर्स्ट परफॉर्मेंस थी, इट वाज एट मिठी बाई कॉलेज, मुंबई. एंड वहां पे आई डन माय फर्स्ट शो. तो वो मेमोरी भी हमेशा मेरे माइंड में रहेगी. इट वाज अ लॉट ऑफ फन, एंड फर्स्ट शो है तो हमेशा स्पेशल तो लगता ही है. इज ऑलवेज मेमोरेबल. ग्रेट.
तो how frequently मतलब do you perform in public? Like आपका YouTube चैनल है, आप इंस्टा पे भी पोस्ट करते हो, but apart from like pandemic era जो हमने देखा, how frequently are you being in performing in the public? वैसे I perform quite regularly, say a few shows every month. But because of the pandemic, I also have a baby nephew at home. तो उनके लिए obviously कोई वैक्सीन वगैरह नहीं है, तो my family is being very cautious. So right now जो physical shows के लिए जो inquiries आ रही है, I've been turning them down. But I've been doing virtual shows. तो corporate events होते हैं, कभी कभी कोई college festivals होते हैं, अलग अलग टाइप के shows होते रहते हैं. तो virtual shows होते हैं, and I'm looking forward to going and performing in front of people. So hopefully by next year, I think everything will restart. Hopefully, like the जो मजा है लाइव सुनने में है किसी भी आर्टिस्ट को, वो Absolutely. डेफिनेटली नहीं है. ये तो जो आपके तालियों का, फैन वैसे मैं कोई ना ड्रिंकिंग कुछ भी नहीं करता, बट सिर्फ एक नशा है, तो तालियों का नशा है जो लाइव में मिलता है. तो दैट इज अ वेरी अमेजिंग हाई दैट अ परफॉर्मर गेट्स. इंस्पिरेशन इंडीड, लाइक whatever you receive from the audience, it's kind of an inspiration कि नहीं मुझे इसमें भी improve करना है, I have to work hard and deliver more better to audience from next time. राइट. राइट. तो ऐसा कोई खास किस्सा जब आप परफॉर्म कर रहे थे जो आपको मतलब याद है बाय सम ऑडियंस, या कोई तारीफ मिली हो, आपने सुनी हो, ऐसा कुछ? बहुत होता है, मतलब स्पेशली आफ्टर द परफॉर्मेंस बहुत लोग आते हैं बैक स्टेज आपसे बात करने के लिए. काफी लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी मुझे यूट्यूब इंस्टाग्राम पे देखा हुआ है, तो आके दे आर वेरी स्वीट, कुछ अच्छा बोलते हैं, कोई सेल्फीज लेते हैं वगैरह. सो वैसे ही है मेमोरीज तो वैसे. Great. So we have actually one question in the chat. Aman wants to ask. I just want to ask, like, is it safe to put music as your first priority? So देखिए म्यूजिक में like I was talking about earlier, I also started from zero, and when you're starting from zero, obviously there's no money. Right now how we make money is through live shows, we make money through brand sponsorships that we do, and stuff like that. तो ये सब आपको तभी होता है when you have a certain following. So initially for first few years till you've created a fan following, I would say don't keep music as your number one, क्योंकि I understand passion is very important, but money is also very important in life. आपको आपके expenses तो cover करने ही है. So initially for me also, I did my MBA and I completed my MBA at the age of 22, and then I decided to work part time in my family business because I felt this is an age where I should be earning, and obviously I was not being able to earn at that point through music. Now I've come at a stage where I'm earning a good amount through music, so I can say कि okay, I will quit my part time job. So initially आप part time भी कुछ कीजिए and passion भी follow कीजिए, and then eventually you can make it your full time number one priority. Right. So we have like another question from Angel. We are sorry to mispronounce your name. Pardon me. She wants to ask, do you take any teaching classes for beginners? No, unfortunately, I don't, because I don't get enough time to take classes right now. But maybe after, say, 6 months or something, I might create an online course where I might record sessions. So basics पूरे में cover करूँगा, and maybe y'all can join the online course. And उस तरीके से I think, but one-on-one लेने का अभी तो खैर time नहीं मिल रहा है, maybe in the future. Right. किसी ने पूछा है is he married, secret superstar, so I'm not married. So, Definitely, like people have a lot of crush, but female following मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा ही है आपकी. So definitely the question आया है. And it's great, like people are so keen and interested to hear from you all those things. So Karan, since you have been performing a lot और आप इंस्टा पे भी करते हो, so how do you like make it happen? Like नहीं मुझे mistakes तो होती होगी, like while recording भी और live perform भी करते हो. How do you overcome those mistakes? the thing is, you need to firstly accept that you are imperfect as a human. आपको पहले ये बोलना है कि like you said, mistakes तो होती ही होंगी, mistakes तो होती ही है. एंड ये मेरे साथ नहीं है, आप लेजेंड्स को ले लीजिए, इंडिया के जो लेजेंडरी सिंगर्स हैं, उनके भी सुर हिलते हैं. स्पेशली स्टेज पे क्या होता है कि आप मूव अराउंड कर रहे हैं, कभी आप कोई डांस मूव कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो सुर आपका हिलना ही है. एंड ये सिर्फ
मेरे साथ नहीं होता है, वो सबके साथ होता है, हर सिंगर के साथ होता है। तो पहले ये एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ मुझसे मिस्टेक्स होंगी। वंस यू एक्सेप्टेड दैट मिस्टेक हो भी गई तो यू डोंट मेक अ बिग डील आउट ऑफ इट। एंड ऑडियंस भी ये समझती है कि हाँ कभी ना कभी कुछ तो मिस्टेक होता है, तो ऑडियंस भी एकदम ऐसे फॉरगिविंग होती है। एंड यू कैन मेक अ जोक आउट ऑफ इट कि बड़े बड़े शोज में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है, यू नो समथिंग लाइक दैट, जस्ट प्ले विद इट, जस्ट लाफ एट इट। एंड उसका बिग डील मत बनाइए। तो दैट इज हाउ यू ओवरकम योर मिस्टेक्स। तो इन शॉर्ट एंजॉय कीजिए जो भी आप कर रहे हैं एंड गो विद द हाँ फ्लो। हाँ, मिस्टेक हो गई तो से ओके फाइन, आई एम ह्यूमन, मिस्टेक हो गई सो मूव ऑन, दैट्स लाइक। राइट। हाँ So another thing which can help to overcome this practice is a consistent practice. या If I'm not wrong. एब्सोल्युटली, या So एब्सोल्युटली। yeah. So how often do you practice then? I try and रियाज for at least 1 hour a day, but I Hmm. hope मेरे गुरुजी ये नहीं देख रहे हैं because I at least 2.5 3 hours is what they suggest कि उतना Oh, रियाज रोज का होना चाहिए। मैं भी कोशिश करता हूँ कि कोई कोई दिन 2 hours कर लेता हूँ, कोई कोई दिन 1 hour होता है, बट एटलीस्ट उतना प्रैक्टिस तो रहना ही चाहिए बिकॉज आपका जो स्मूथनेस होती है वॉइस में या मुर्खियां लेने में या हरकत लेने में, वो अगर आप रियाज छोड़ देंगे तो वो चली जाती है। तो यू नीड टू रियाज। और एक थ्योरी भी है वेर यू नीड टू प्रैक्टिस फॉर 10,000 hours टू बी अ hmm. मास्टर एट एनी स्किल। तो जो भी स्किल में आपको इंटरेस्ट है, अगर 10,000 hours आप करते हैं तो यू विल बी अ मास्टर। सो दैट इटसेल्फ वुड बी से 20 hours a week for 10 years। इतनी मेहनत के बाद जाके देन आप किसी स्किल में एक मास्टर बनते हैं। Right. So like someone has commented that it has happened with me as well. Like when we were talking about the mistakes, like and everything. एग्जैक्टली, सबके साथ ही होता है ये। हाँ Correct. सो इज इट स्पेसिफिक कि आपने सोचा है कि मैंने यही पैटर्न में प्रैक्टिस करना है, लाइक मुझे आज वोकल्स करना है, फिर मुझे रिदम पे काम करना है एंड देन स्पेसिफिकली थ्रोट ट्यूनिंग पे काम करना है, तो इज इट अ स्पेसिफिक पैटर्न या आपका कुछ और स्केड्यूल है, लाइक यू हैव प्लान फॉर योरसेल्फ व्हिच सूट्स यू द बेस्ट? हर सिंगर के अपने अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होते हैं। तो अगर स्ट्रेंथ्स है तो स्ट्रेंथ्स को भी प्रैक्टिस करना है, बिकॉज अगर फॉर एग्जाम्पल आई एम आस्क्ड कि आप कुछ गाना सुनाइए तो मैं ऐसा गाना सुनाऊंगा जो मेरे स्ट्रेंथ के कैटेगरी में आता है, वेयर आई कैन राइट। शोकेस। बट एट द सेम टाइम आई एम आल्सो अवेयर कि अच्छा दीस थिंग्स आर माय वीकनेसेस। सो जो वीकनेसेस है उनको मैं एक एक करके पकड़ता हूँ और उनपे ही समझिए, एक मेरा वीकनेस है कि बहुत स्ट्रॉन्ग ईयर ट्रेनिंग मेरी नहीं हुई है। तो अगर ये मेरी वीकनेस है तो आई विल वर्क ऑन इट फॉर 2 3 months, जब तक वो वीकनेस मेरी एलिमिनेट हो जाए, देन आई विल मूव ऑन टू माई नेक्स्ट वीकनेस। तो वैसे रियाज भी कैसे होता है कि आप जनरल रियाज रोज करते जाएंगे, आपको कुछ हेल्प नहीं होने वाला है। रियाज कैसे होता है कि अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसकी सर्टेन दवाई होती है। तो एक राइट। अगर मुझे ईयर ट्रेनिंग का है तो ईयर ट्रेनिंग के पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस होते हैं। तो जो भी आपके वीकनेसेस है वो आपके गुरु से पूछिए कि आपके वीकनेसेस क्या है, एंड उस पे ही वर्क करके उसको एलिमिनेट कीजिए, एंड दैट इज हाउ यू विल कीप इम्प्रूविंग एज अ सिंगर। ग्रेट। मतलब दैट इज अ की नोट लर्निंग जो एक्सपीरियंस के साथ आती है, बट या यू हैव टू इवेंचुअली वर्क ऑन इट। मतलब कोई भी नया आर्टिस्ट अगर आना चाहे तो इट्स अ पॉइंट वेल नोटेड। राइट। ग्रेट। तो लाइक सिंस यू हैव बीन रिसीविंग लॉट ऑफ अप्रिसिएशन, लाइक आपको अपने फैन से भी मिलती होगी या किसी से, बट इज देयर समथिंग जो कोई फैन आपको सिखा के गया, या ही माइट हैव गिव यू सम सजेशंस या कुछ, तो ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ, लाइक एनी इंसिडेंट्स? डेफिनेटली आई थिंक हेट जो होता है उसके लिए ऑब्वियसली आई इग्नोर हेट कंप्लीटली, बट जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होती है दैट इज वेरी एसेंशियल। आई गो एंड सीक आउट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑल्सो वेरी एक्टिवली, कि मेरे गुरुजी को दिखाऊंगा कि बताइए मिस्टेक्स क्या है इसमें। कि बेस्ट फ्रेंड्स जो है या फैमिली है, जो भी ट्रस्टेड लोग हैं, उनको मैं पूछता हूँ कि अच्छा मिस्टेक्स बताओ, बिकॉज ओनली देन आई विल इम्प्रूव। एंड सेम वे मेरे जो फैंस है मेरे फैमिली के जैसे हैं, फैंस मैं नहीं कहूंगा उन्हें, मेरे फैमिली के जैसे हैं, वो भी मुझे डीएम्स करते हैं। जैसे अभी मुझे एक डीएम आया था कि सर आप रील्स में गा बहुत अच्छे रहे हैं, बट आपका जो वीडियो है वो आप एक ही जगह पे खड़े हैं थ्रू आउट द वीडियो, तो वो ओके। स्लाइटली वीडियो एंगेजिंग कम है। सो आई सेड दैट इज राइट। सो जैसे ही वो मुझे मिला, सिंस देन आई स्टार्टेड यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट बैकड्रॉप्स, कि एक लाइन यहाँ पे शूट की, एक लाइन वहां पे शूट की, ऐसे करके कहाँ पे मैं थ्री वे स्प्लिट स्क्रीन बना रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। तो whenever I get good constructive criticism, I'm always ready to accept it and grow with it.
Great. But with constructive criticism comes the hatred. So normally like we are for देखते हैं सोशल मीडिया पे वेरी कॉमन कि ट्रोल्स आते हैं नेगेटिव कमेंट्स होते हैं सो हाउ डिड यू हम्म। हैंडल टचवुड, मैं कहूंगा पहले तो मुझे बहुत हेट नहीं मिला है थैंकफुली, एंड मिलियंस में भी व्यूज गए हैं, बट हेट मेरे तरफ आया है ऐसे नहीं बोलूंगा मैं, बट बहुत कम आया है। एक हेट और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में डिफरेंस है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आई डेफिनेटली टेक, हेट आती है तो अभी सिर्फ हंसी आती है, एंड आई जस्ट इग्नोर इट। जो भी मेरे फैंस है या जो मेरे इंस्टा और यूट्यूब फैमिली के लोग हैं, वो जो वैल्यूबल ओपिनियंस मुझे देते हैं मैं उस पर ध्यान देता हूँ। हेट आई कंप्लीटली इग्नोर, एंड मुझे अभी फर्क भी नहीं पड़ता है हेट आने से। सो दैट्स अबाउट इट। मतलब आई जस्ट कंप्लीटली इग्नोर इट। या तो कोई अपनी राइट फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है या किसी को अटेंशन चाहिए। एक दो बार मैंने सालों पहले किसी हेट कमेंट को रिप्लाई दे दिया था, तो हाँ जैसे ही आप उनको रिप्लाई करते थे टर्न अराउंड एंड से एक्चुअली वी आर अ फैन, वी जस्ट वांटेड योर रिप्लाई। तो अरे but I have made a strong rule that I completely ignore hate. So there's no point getting into an argument with anyone. It's their opinion. I have nothing to say about it. ग्रेट टू हियर दैट लाइक निगेटिविटी जितना दूर रखोगे उतना ही इजी है कॉन्सेंट्रेट ऑन योर हाँ, वर्क there's no दैट point. हाँ. राइट सो व्हाट आर योर लाइक फ्यूचर प्लान्स मतलब यूट्यूब पे यू आर इवेंचुअली प्रोग्रेसिंग ऑन इंस्टाग्राम आल्सो बट व्हाट आर यू लाइक एमिंग टू नेक्स्ट फॉर द स्टेप So right now, अभी 70,000 की एक फॉलोइंग बन गई है। आई एम वेटिंग टू क्रॉस 100K, होपफुली वेरी सून। एंड उसके बाद आई वांट टू स्टार्ट मेकिंग ओरिजिनल्स। मैंने बहुत कवर्स, बहुत मैशअप्स बना लिए हैं, एंड जो क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन मुझे भी मिलेगी दैट विल बी थ्रू माय ओरिजिनल सॉन्ग्स। तो कोई जो टॉपिक्स है जिनके बारे में आई फील वेरी स्ट्रांगली, उनके बारे में मुझे गाने बनाने हैं। आई वुड लाइक टू राइट द लिरिक्स माई सेल्फ। अभी भी आई मेक न्यू लिरिक कवर्स, तो खुद मैं लिरिक्स लिख के नए वर्जन्स बनाता हूँ सॉन्ग्स के। I just saw your cover on that trending Sri Lankan song. Like, हाँ, मैं मरी के मागे थे। यस। but I listened to that. So those lyrics are written by you, by या, yourself. राइट। सो मुझे लिरिक्स राइटिंग का भी शौक है, तो नेक्स्ट प्लान यही है कि मैं अपने ओरिजिनल सॉन्ग्स बनाऊं, एंड वो उनको लोगों तक पहुंचाऊं। Great. So Khan, Mr. Khan wants to know from where are you, Karan? आई एम फ्रॉम मुंबई। So मुंबई born in what? में आई एम born and raised in Mumbai. हाँ, full entire life Mumbai. Okay. So like since you're targeting to have like followers तो है ही but creative content पे आपका ज़्यादा focus आने मतलब you're going to concentrate on that. So how does success then seems to you? Like अभी तो मिल ही रही है but what is your definition of success? What would satisfy you? इस पे भी मेरा एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू है, बट बिफोर दैट आई थिंक मिंकल हाय एंड सानिया हाय, ये वो तो ये बोल रहे कब से हेलो, तो आई थॉट आई जस्ट एड्रेस देम। Yeah. सक्सेस का देखिए, व्हाट आई हैव रियलाइज ओवर टाइम इज दैट आप कुछ भी कर लीजिए, यू यू सक्सेस विल नेवर बी इनफ फॉर सोसाइटी। तो आप समझिए अभी मैं 100 के अचीव कर लूं, सीधा लोग बोलेंगे अच्छा अब अभी तो ये 1 मिलियन पहुंचना चाहिए, 1 मिलियन पहुंच जाओ, इसको तो 10 मिलियन पहुंचना चाहिए। सो Right. दैट वे वो मैं एक घोड़ा बन के रह जाऊंगा जो भागते ही जा रहा है, भागते ही जा रहा है पूरी लाइफ में। एंड सोसाइटी को प्लीज करना, देयर इज नो पॉइंट। आपको खुद बैठकर आई थिंक यू शुड क्वेश्चन योर सेल्फ कि व्हाट इज सक्सेस फॉर मी। Once you ask yourself that, for me success is creating impact through my original songs. तो लाइक यू सेड कि ये नंबर्स वगैरह इतने मैटर नहीं करते, जो मैटर करता है इस कमेंट्स की। सो मैं डिप्रेशन से निकला हूँ आपके गाने सुनकर, या आई वांट टू बी लाइक यू, दीज आर कमेंट्स दैट रियली मेक माय डे, एंड दीज आर कमेंट्स दैट आई रियली वैल्यू। तो मैं यही चेस कर रहा हूँ, आई वांट टू चेस impact that I can create in people's lives. So that is my definition of success in my own life. So once I put out enough originals where I feel like I've created some impact, even 1% impact, then I think I'll consider myself successful. It's great to hear your thought. And Priyan wants to say that you will become a great singer. Thank you, Priyan. आप सबके Yeah, सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होगा, तो you guys are there, तो हम लोग कुछ तो कर पाते हैं। बिल्कुल. So, like, how important is it for a creative person or an artist to have a satisfaction is
in himself or herself, like in terms of his creativity or in terms of his productivity that he's in delivering to the audience ultimately. So It's, huh. satisfaction level कितना matter करता है एक artist के लिए? It's very important and it's a very good question. Especially what is happening on social media is कि there's this pressure to follow trends. जो गाना Hmm. ट्रेंड चल रहा है ये करना है तो वो लगता है क्या जी इवन इफ आई डोंट एंजॉय इट आई हैव टू मेक दिस जस्ट टू गेट व्यूज एंड गेट मोर रीच तो उसमें कई बार क्या होता है कि क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाती है बट ऑल्सो ये आर्टिस्ट पे डिपेंड करता है कि आप ट्रेंड को किस तरह मोड़ते हैं एंड व्हाट ट्विस्ट यू गिव टू द ट्रेंड एंड यू मेक इट इनटू समथिंग Your दैट यू एंजॉय डूइंग फॉर एग्जांपल जैसे मनी के मागे हिते गाने में शायद मुझे इतना मजा नहीं आता सिर्फ वो मैं श्रीलंकन लिरिक्स अगर याद करके गा देता बट मैंने बोला कि हाँ मुझे इसका हिंदी वर्जन बनाने में मजा आएगा लिरिक्स लिखने मिलेंगे there's a lot of creativity involved या फिर ये ट्रेंड चल रहा था ऑफ आई लव योर गुजराती एक्सेंट आई लव योर मराठी एक्सेंट so I said how can I twist it around and make it about myself so I said oh my god I love your Mickey Mouse accent and then I spoke like Mickey Mouse तो वही चैलेंज वही है कि उसको क्रिएटिवली सेटिस्फैक्शन के लायक कैसे बनाया जाए तो वो आर्टिस्ट को आना चाहिए बिकॉज इफ यू डोंट एंजॉय मेकिंग कंटेंट तो स्पेशली कंटेंट आप मेरे प्रोफाइल पे भी देखें तो ऑलमोस्ट एवरी डे एक पोस्ट आता है इफ आई डोंट एंजॉय मेकिंग इट आई कांट बी कंसिस्टेंट यू नो आई विल ट्राई एंड रेजिस्ट मेकिंग कंटेंट क्योंकि मजा ही नहीं आ रहा तो व्हाट इज द पॉइंट मैंने पैशन फॉलो ही किया है म्यूजिक सो बिकॉज आई एम एंजॉयिंग इट एवरी डे आई डोंट फील लाइक आई एम वर्किंग इट फील्स लाइक अ पार्टी तो अगर मजा ही आना बंद हो गया so there's no point I rather do something that just helps me make money. Great. You have another comment and an appreciation comment. You have a very soft voice. You can do everything in your life. Thank you so much, you guys are very kind. Great. Now one of your fans want to know that when are you coming to US and he wants you to perform over there. US, I think, will not happen this year definitely because travel and all. There are a lot of restrictions, especially because I've taken Covaxin. So with Covaxin, you can't travel outside India. So ये छोटे छोटे issues वगैरह है, but hopefully next year, whenever there's a show, good show, then I would love to perform in the US. Correct. So Nishi wants to say that you have a very good personality as well, along with your Thank you, voice. Nishiji. Nice to see you here. So talking about creativity, you said that you came up with that. How sexy does your Mickey Mouse accent sounds? So like, Yeah. how did you discover this side of your person? Like vocals, गाना तो है that's in another, but voice over मतलब है तो पूरा distinctly different genre एक type का. Right. So how did you come up with that? तो पहले तो देखिए परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए आई ऑलवेज हैड एन इंक्लिनेशन सिंस चाइल्डहुड सो बी इट इनिशियल स्कूल टाइम में मैं डांसिंग में भी था काफी ये वो तो हर टाइप ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स मैंने प्लेज में किया है एक्टिंग की है वगैरह खैर अभी वो सब तो छूट गया है बट मिमिक्री भी आई थिंक बस कभी मिकी माउस का वॉइस सुना तो आई थॉट लेट मी ट्राई एंड डू इट तो काफी अच्छा हो गया एक बार मैंने ऐसे ही स्टोरी पे 15 सेकंड का क्लिप डाला बट I think there were more than 100 responses that I got for that. Ki we are shocked कि ये क्या है and make reels with this. So recently I started showcasing that side of my personality and दो reels मैंने डाले with that voice. Yeah, great. So any other voice have you ever tried other than Mickey Mouse? I tried. Voiceovers. I've been क्योंकि वो comments में वही आ रहा था कि now next we want Shinchan's voice. So I was like ठीक है let me try and see if it happens because I don't want to put out bad work. Only if I feel I've nailed the voice and I can actually sound like him will I put it out. So let's see. So practice and hopefully हमको आपका कोई और voice over version भी सुनने को मिलेगा. Hopefully because it's something that I enjoy doing. बहुत मजेदार है लोगों को भी बहुत हंसाता है स्माइल करता है कराता है so you know let's see I'll try and do more voices also soon. Like people are blessing you with their sweet comments. We have another comment like you have soothing voice, also a good sweet behavior. Thank you so much. It's because of you guys. Yeah, and another one talks that you are doing really well and great. Thank you, Tanush Khare. And people have suggested for voiceover like Doraemon, Nobita.
Doraemon also I'll try. Doraemon, Shinchan. I've actually done a cartoon mashup. I don't know if you've seen it, but it's quite popular on YouTube where I've done a mashup of Doraemon, Noddy, स्कूबी डू पोकीमोन इन सब के जो गाने थे बिकॉज इट्स लाइक अ वेरी नॉस्टैल्जिक थिंग ये सब हम लोग सब बचपन में ये सब कार्टून्स देखते थे तो उसका एक मैचअप Great. Another suggestion, Pikachu for you. ओह वाओ पिकाचू वेरी इंटरेस्टिंग Another nostalgia. एक्टिंग बहुत रिक्वेस्ट आ रहे प्लीज सिंग अ सॉन्ग प्लीज सिंग अ सॉन्ग Yeah. तो क्योंकि गणेश चतुर्थी का टाइम है मैं गणेश जी की आरती थोड़ा बहुत गा देता हूँ आपके लिए एंड हैप्पी गणेश चतुर्थी आप सबके लिए सबको तो ये जय गणेश की जो आरती है वो आपको थोड़ा सुनाता हूँ एक दंत दयावंत चार भुजाधारी माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा शुक्रिया Great. Thank you so much for making our Ganesh Chaturthi more special and sweet like moments. थैंक यू Okay. So another comment like we have where was it? Like I just missed on one of the comment, but it was asking that are you coming to Kolkata? If I'm not wrong. कोलकाता होपफुली सून आई थिंक शोज की वजह से ट्रैवल होता है तो अभी तो कुछ प्लान में नहीं है बिकॉज आई एम ओनली डूइंग वर्चुअल शोज राइट नाउ बट होपफुली नेक्स्ट ईयर Yeah, and Bangalore as well. Like people are requesting you to come and visit and have a grand event over I there. would love to. I'm dying to meet them as much as they want to meet me. Yeah. Great. So like I just wanted to know like overall experience abhi tak ka if you want to sum up with some key learning. So what that would be as an artist. Right. So overall learnings, when if you choose to become a creator of any kind, be it singing, dance, whatever, you need to understand that it will take time. आपने चालू किया 6 months में आप वायरल सेंसेशन मोस्ट प्रोबेबली 99% नहीं होने वाले 1% वो चांस रहता है ओवरनाइट एनीवन कैन बिकम अ सेंसेशन बट जनरली इट टेक्स अ फ्यू इयर्स फॉर यू टू मेक इट दूसरा क्या होता है कि लोग बहुत स्वीट होते हैं तो जनरली बहुत लाइक्स कमेंट्स में आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे कमेंट्स कभी कभी मिल जाते हैं और अगर वो आपके सर पे चढ़ गई बात तो आप लर्निंग रोक देते हैं एंड अगर लर्निंग रोक दी तो आप विद इन 1-2 years योर करियर विल बी ओवर तो आपको वो समझना है कि लोगों का प्यार है और उसे हम सबसे ज्यादा वैल्यू करते हैं बट उसके साथ यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि द ओनली थिंग वी नो इज दैट वी डोंट नो इनफ we need to constantly keep learning you constantly need to keep updating yourself you need to see कि दूसरे creators किस तरह का content बना रहे हैं क्या चल रहा है आजकल and you need to adapt ऐसे नहीं कि मैं 2 साल पहले ऐसे cover बनाता था तो वो आज चलेंगे every 6 months to 8 months I think the trends change and you have to change according to that तो ये कुछ learnings है and keep at it and eventually things will start working out for you मैंने भी सालों तक like I said 100 views 50 views 75 views देखे हैं and eventually कोई videos आपके millions में जाते हैं so that's the journey for everyone काफी लोग हैं जो मुझे पूछते हैं and I know कि वो बहुत demotivated हो जाते हैं and it is very demotivating अगर आप महीनों तक काम करके एक सॉन्ग बनाओ and उसको कोई ना देखे it feels so bad it feels so bad and I have been there तो इट्स जस्ट द जर्नी खुद को ये मत बोले कि मुझ में टैलेंट नहीं है मुझ में वो बात नहीं है बात है कि आपको कुछ सालों तक मेहनत करनी है डालते रहना है एंड देन थिंग्स विल चेंज फॉर यू Right. So consistency always pays off one day. या डेफिनेटली Great. So thank you, Karan. It was a beautiful evening chatting with you. मतलब आपने गाने भी सुनाए, आपने अपनी learnings भी share की, and your experiences definitely speaks like what your struggles and your journey has been. Plus आपके लिए जो comments आ रहे हैं, तो I'm sure कि people are there loving you out way through, and they're more than excited to have your content being appreciated and being posted continuously.
So we are just hoping that you have a bright future, you have more collaborations, big projects coming your way, and all the very Thank best. you. Thank Great. you so much for having me. I love talking to you and everyone. एक कुछ तो आई थिंक मैं ये लाइव मेरे थ्रू होस्टेड नहीं है सो आई डोंट हैव द अथॉरिटी टू ऐड एनीवन टू द लाइव ये Yeah. समवन इज रिक्वेस्टिंग उनको बहुत लाइव पे आना है आई डोंट नो इफ दैट वर्क्स और नॉट सो दैट इज अप टू यू Tanya to see. But thank you everyone for joining, and I hopefully will come live a lot more because I love talking to all of you. And thanks Get again to the for a season 2, like a event 2 of your meet. yeah, yeah, definitely, definitely. And Yeah. thank you so much for having me. Thank you to the entire Social Parindey team and to my lovely Instagram families. Thank you so much for joining. I love you guys, and I'll see you guys very soon. एक मिकी माउस वाला थैंक यू बाय बाय हो जाए. Bye. Great. Take care. Bye. Bye bye. So thank you all the wonderful audience for your constant messages, comments. बहुत अच्छा लगा आप सबसे interact करके and आपके comments ने पूरे मजे को दुगुना कर दिया. So thank you so much पूरे evening में चार चांद लगाने के लिए, and of course thanks to our very own guest Karan sir for his contribution, his time and his so brilliant interaction with us. So thank you much. See you. Bye bye. Take care. Good night.